Very good morning, my dear friends. Today we'll start with assembler. As we all are aware that unit number one focuses on the various system softwares. In that, one of the very important system software is assembler. So unit one is taking care of introduction to all system softwares and in-depth knowledge that we must have by using assembler. So I'm Mahesh Sangvi, working as Professor and Head, Department of Computer Engineering, SNJB's Let's OK Vision College of Engineering, Chandwad. Welcome you all on this today's session of Assembler. Let's have a discussion on what are the things that we will actually have in this particular session today. So the outline of today's session will be, we will focus on the as usual way, that is review of previous session. Then we'll focus on identify how to identify the statements that one of the assignment that I have given into Google Classroom, and I have explained that particular part in previous session itself. Then we'll focus on the part that we have to focus, like today's aim is what the understand machine structure. Then we'll focus on two pass assembler, and from that pass one as well as what pass two that we have to focus. So let's focus on what the assembly language, that is previous session we had a discussion that there are various types of assembly language statement. If you remember or if you recall, there are basically three types of assembly languages statement. Very first one is imperative statement. So the move instruction, add instruction, move m instruction, these are ultimately known as what? These are ultimately known as your imperative statement. Okay, these are known as imperative statement. We call it as is in your language, right? You normally call it as what? Is. Okay. Then next part will be this where you will understand that this is assembler directive statement. Okay, this is known as what? Assembler directive statement. So your start 100 and end both are what? Assembler directive statement. So the two remaining statements are ultimately known as what? Declarative statement. So we normally call it as what? DS. So this is what an assignment that I have given to you, and I hope you all have submitted this particular assignment well in time. If not, I request you all to please submit the assignment in time in Google Classroom itself. So let's have a discussion on this. We all are, I have already told you that we have what question can be like this: identify the types of statement. And many times this question is coming for 4 marks or 6 marks, where you have to give the explanation why this is imperative statement, because we always have to understand imperative statements are all talking about actions. So these are known as what? Imperative statement. When there is part of declaration, so before action, if we need certain declaration, the way we were actually doing in case of what? C or C++, like integer, or we were actually declaring the variables first before their use, like integer a comma b comma c are declarative statement. But when we see that a is equal to 10, means we are assigning the value of 10 to what? A is action. It is ultimately what? Action. That is, assignment is one of the action, and such a statements are known as imperative statement. So my dear friends, we need to understand which is imperative statement into given code. Then DS stands for declarative statements and AD stands for assembler directive statements. So now you will understand that by observing this particular code. Okay, what was our code? So code was like this: start one. So what is start 100? Code 1, start 100 is what? It is ultimately coming under the category. This statement 1 is coming under the category of what? Assembler directive, because start 1 is assembler directive statement. Now the statement 2, move R, okay, means move the value of register. Okay, so it is actionable word. Okay, and due to this actionable word, it comes under the category of what? Is. So we will understand by this that this second statement is coming under the category of what? Is. That is, it is becoming imperative statement. Now next, the third statement is again imperative statement. The fourth, that is add a register comma y, is again what? The imperative statement, because it is also talking about what? The action verb. So if you observe start, it is simply saying assembler, means it is giving direction to assembler that you have to start.
move are, and add, these are actionable words. They are saying that we need to move or we need to take some action, and that is the reason they are coming under the category of imperative statement, that is is. Now moving towards the next three statements, you can observe here again, okay, the structure is like this, and you can observe the fifth statement is move m is again imperative statement. So earlier were move r, it was talking about register, and m stands for what? Memory. So this is again actionable statement and coming under the category of is, that is imperative statement. The sixth one, that is xdc10, it is saying that declare the constant x, and it has the value which is assigned like 10. So x will become literal, or in general language we are saying it as what? Constant, but in this particular system programming it is treated as what? Literal. So x will be literal, and that literal will be having the value 10. So dc is ultimately known as declare constant, and this is declarative statement. So statement number 6 will become declarative statement. Now the seventh one, ds, declare storage. So y will be having storage like 1. So 1 byte space will be given to whom? Y. So ds stands for declare storage. So this is again declarative statement. So seventh statement will be again in the category of what? Declarative statement. The last one, that is end, okay, and this end statement is coming under, again it is assembler directive statement. It is directing the assembler that now we have to what? We have to end your task. So this shows that these are the way where we can able to identify what the statement. I hope this assignment is given to you, and many of you have already submitted this assignment. I'm happy for that. I must congratulate all those who have done right assignment, but those who have not yet understood this particular part, I hope from this session it will be clear to you all that actionable word means is. Ds, there are only two statements. This is dc and ds, okay, these are only two statements coming under the category of what? ds. And ad, okay, that is assembler directive statement. This is saying that start, end, and there are some 3 to 4 more assembler directive statements. So once we understood that, I hope you can able to identify the types of statements easily. Some of the definitions that we need to understand and that I have already covered, that is LC is location counter. It is pointing to the next address, okay, next instruction that we have to execute. So this we need to understand. Symbol is your identifier, or you can call it as variable. Literal can be known as constant, that so the constant value will be given to this, and procedure will be what? Your methods or your functions. Okay, so this terminology I have already explained you in my previous lecture. If you have any doubt in this, you can anytime observe the video that I have shared with you in Google Classroom. Now machine structure, this is important. This is what the machine structure which is given to you, okay. Very rare time it is asked in university that you have to what? You have to draw and explain the machine structure of 360 machine, okay, or any machine structure. In case of your system programming, you have to draw this and you need to explain that, okay. So what is this machine structure? Please understand it properly. Now basically what? This is something related to memory, okay. This is all memory, where memory locations are given here, and the things which will control to memory are here, okay. So memory controller will take care of what? It will take care of the locations which is important, and the entire control will be there to what? Memory controller. Then memory address register, it will take care of what? Which memories are, or which instructions or data is pointing to which particular address. So that will be taken care by that. And finally MBR is memory buffer register. This memory buffer register is telling you that whenever you have to perform any sort of internal operation, that buffer space will be allotted to you by using memory buffer register. We all are aware that there are IO channel. IO stands for input and output. Whenever we need to print something, we normally take it from what? Memory, and then we print it on what? Console, that is output device, okay. Or something that we have to take from what? Input, as an input, again we normally assign that value to variable, and that is ultimately stored where? It is stored from IO to what? Memory. So IO is it is bidirectional, that says that it will be used for input as well as what? Output. Next is location counter.
We all are aware that location counter is actually pointing to what? The next instruction, and that is the reason it is moving towards what? The memory address register, because memory address register will actually pointing to the physical address, and that is important here. Then there is what? Instruction register. So this instruction register, so if you observe this particular part, instruction register will take care of what? The entire instruction related to information, that is opcode and all, will be actually what stored there. So the type of instruction, what will be its like how it will be interpreted in a what machine language. So entire data will be taken care by what? Instruction register. And you can see here memory buffer register will be needed here. Why we need memory buffer register? Because this instruction will tell us, for example, we are talking about add. So when we are talking about add, that addition will be performed. For that, we need what? Some buffer space from memory. And that is the reason here memory buffer will be what? Connected to this instruction where the data will what? Take place. So you can see that working registers will be there. So addition will perform into that working register, and that register, that area will be what? Your memory buffer area. And finally, the result will be what? Result will be communicated to on the console, or that it can be communicated to a particular register. So that is what the beauty. So instruction register will communicate with what? Instruction interpreter, and from this we will understand that whether we have to move on to the next location, or we have to think about to point to what? Memory. Because again, you need to understand the instruction can be related to memory, or it can be related to what? Register. When it is related to memory, it will go to what? This memory address register. When it is related to what? Register, it will definitely go at this particular part. So this is what we need to understand. In case of what? In case of general registers, there may be possibility that we all are aware. There is accumulator is one of the concept. There are so many general registers which are there. If we are using that general register in an instruction, in that case, we need to use this general register. So this entire dotted block is actually known as what? CPU. That will actually work. Okay, and we have to what? Execute the instruction. So memory is here where the data will be stored. IO means your keyboard or your monitor, entire input output devices will be connected here, and this will be your CPU where the actual operations will be what? Performed. So this is entire structure of your machine, 360 machine, so that you need to understand. Now machine instruction format should be known to us. We know that first two things are given for what? Opcode. So first two digits will be given for what? Opcode. Okay, so opcode can be, it is seen into machine opcode table. For example, I'm talking about instruction like add. So we need to observe what is the opcode, means we need to observe the opcode table where some numeric values will be given for that opcode, and that we have to store here. So opcode has two spaces. Register operand will be having one space. Reason is very simple. There will be maximum 2, 3, or 4 registers that we have to use. So 1, 2, 3, 4, or sometimes it is given like A, B, C, D, or sometimes it is given like A register, B register, C register, D register. So that needs only one operand. Okay, and one space is needed for that. That is normally operand. And next will be what? Memory operand, where we need 3 digits of data, where this will directly pointing to what? Memory. For example, suppose if I take an example of this so that you can understand, suppose I'm talking about the instructions like move M, where I'm talking about A register, and here I'm giving, let's say, some particular address. So here move M will be opcode, A register will be stored into register operand, and this will be what? As a memory operand. So this we need to understand by using this particular logic. So I hope this is again very much clear to you. In case of your microprocessor, you might have seen opcode, operands, okay, because there are basically this that depends on what kind of instruction it is. If it is binary instruction, it will take operand. If it is unary instruction, it will simply take what? Only one operand. So which is unary, which is binary, that we'll see into what later stages. Now, let's focus on what? Assembler. This is what the fundamental knowledge which we were needing. That is, we must have a knowledge of assembly language. We must have a knowledge of machine structure. We have seen that, and now we all can able to work out with what? Assembler. Always remember, assembler here that we have to study will be 2-pass assembler. So pass 1 and pass 2 will be what? Separated, and I'll explain you the importance of pass 1 as well as what? Pass 2. So this is very clear that your first code will be passed, it will be done at pass 1.
मीन्स द वे यू वर एक्चुअली डूइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जहां पे पास वन में आप लोग कुछ नंबर सॉर्ट करते थे, फिर पास टू में सॉर्ट करते थे, फिर पास थ्री में सॉर्ट करते थे. सो लाइक वाइज देयर विल बी टू passes in case of your two pass assembler. Okay, so pass one will take care of some task and pass two will take care of some task. So what kind of task will be done? So pass one assembler is actually separating what this tokens, that is ultimately labels, then mnemonic opcode, and your operands. Okay, these are the three things will be what separated. For example, label means what? Suppose you are talking about one of the instructions like loop one. So one will become what? Label. Okay, तो कहां पर जाके लूप करवाना है, that becomes what? Label for that particular loop. Mnemonic opcode means the instruction code, opcode, machine code for that will be mnemonic opcode. And operand fields that we have seen that sometimes there will be register, sometimes there will be memory operand, maybe single operand, maybe two operand, double operand. So that is ultimately what? Operand. So separation of this will be taken care into pass one. Apart from that, pass one will also determine the storage requirement. Take care how much space which is required to store that particular variable. So that's the beauty of pass one for this kind of task. Apart from that, it also builds the symbol table, as well as it also builds your literal table. Okay, so that you need to understand, it builds symbol table as well as what? Literal table. That is the main duty of what? Pass one. Now pass two, it will generate the machine code. Okay, pass 2 will simply generate what? The machine code. So what exactly it is doing, that we will see practically, so that you all will understand the actual use of two pass assembler. So let's focus how pass one assembler works. So it uses what? It uses some of the data structure. We need what? Some data structure for this. Okay, and that is the reason it is also in this particular session, I have already told you in prerequisite itself, we need what? Fundamental knowledge of data structure. But don't worry, if you are unable to recall the knowledge of data structure, I am there to recall the important concept which we'll need here. Okay, so pass one assembler uses some data structure, and there will be a fabulous question many times that what are the data structures which is needed for assembler. So we need to understand what are the data structure which is there. So you need to understand that there is basically four data structures that we need. Machine opcode table is one of them. Okay, where the entire instructions and its code will be stored. Okay, means your all kinds of instructions. It may be your assembler directive statement, it may be imperative statement, it may be your declarative statement. Their code and their instructions, means their machine opcode, entirely will be taken care into by this particular data structure, which is known as machine opcode table. Literal table will take care of all the constants. So whenever you found the constant in a what, or literals in a program, okay, we need to store that its entries into what? Literal table. So pass one will use both the tables. Now the third table that will be used by pass one will be symbol table. So this symbol table, difference between literal table and symbol table will be that literal table will take care of storing constants, and symbol table will take care of storing variables. So henceforth, literal, this terminology is coming, you have to always consider that it is all about constant. And when symbol is coming, it means that I am talking about what? Variable. So this should be in your mind. And the last table that is needed, that is known as what? Pool table. So many times in examinations, okay, you have in last year examinations only, if you observe, there was question that the program set was given to you, okay, instruction set was given to you, one program is given to you, and from that program you need to only what? You need to specify what will be the value of machine opcode table, what will be the value of symbol table, what will be the value of literal table, and what will be the value of what? Pool table. So we'll see one by one, so that we will understand. This pool table is normally where we need what? Some instructions that we need to pull. So I'll again explain you all this particular part by taking some example. So contents of MOT are fixed for an assembler. Always remember, it is known as what? MOT. So sometimes I may use what? Shortcut names. Okay, I may use shortcut names. You need to understand this is MOT, that is machine opcode table. Okay, I may use what? LT for your literal table. Okay, LT for literal table. Then
ST for symbol table, and PT for pool table. My dear friend, I know that you all are also having what habit of calling your friends or anyone by using what the shortcut names, you know. So this is ultimately known as MOT. Okay, it is shortcut for machine of code table. ST will be for symbol table, LT will be for literal table, PT will be for pool table. I will try to explain you always with long form, but there may be possibility that in further slides you may observe these kinds of words, so that we need to understand here. So let's move on the next part, like what are it's all about. So this is what the instruction set which is given to you. एक प्रोग्राम हम लोगों को दिया है, तो दोस्तों प्रोग्राम को देख के डरने की जरूरत नहीं है. इस प्रोग्राम का क्या मीनिंग है, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसका क्या आउटपुट आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. इसकी हमें यहाँ पे फिलहाल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो जो लोग प्रोग्रामिंग को डरते हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ये कुछ भी हमें हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा. ओके, आपको यहाँ पर देखना क्या है, स्टार्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज, असेंबलर डायरेक्टिव. Move R, what kind of instruction it is, imperative statement. This is again imperative statement, this is again imperative statement. Origin, this is known as assembler directive statement. What origin is doing, that we need to understand first. Okay, so मैं फिलहाल आप लोगों को origin क्या करता है ये समझाता हूँ, या start 200 क्या करता है पहले ये समझ लीजिए. Start 200 is saying that the value of location counter, okay, the value of LC will be assigned to what, 200. means आपको कहां से स्टार्ट करना है, 200. so this will be your starting point. which will be your starting point, this will be your starting point, and this will be known as what, 200. okay, ये आपका क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा. so my dear friends, you need to understand that location counter is this and it is pointing to move R and it has assigned the value like 200. so start 200 क्या करेगा, असेंबलर को ये बोलेगा कि आपको 200 से प्रोग्राम का कोड मिलेगा, वहां से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है. That is the duty of to start 200. Okay, now next part, origin क्या करता है, that we need to understand. What origin is doing, origin is actually taking care of what, origin is actually taking care, ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या करेगा, origin क्या कर देगा, L1 यानी आपका जो भी L1 है, this one L1 कहां पर है, यहां पर आपको समझना है, L1 इज अवेलेबल हियर. ये L1 को +3 करना है, यानी क्या, आपका जो भी लोकेशन काउंटर रहेगा उसका वैल्यू जो भी रहेगा वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे चेंज करना है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर हियर, LC विल बी इक्वल टू L1 +3. नाउ व्हाट इज L1, वो हम लोगों को ढूंढना रहेगा. L1 का वैल्यू क्या है वो ढूंढना होगा, उसमें +3 ऐड करेंगे, वो लोकेशन काउंटर का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, you need to understand there are two instruction. One is your start and another one is your what, will start as well as what, origin. ये दोनों के दोनों लोकेशन काउंटर का वैल्यू को क्या करते हैं, सेट करते हैं या चेंज करते हैं. Is that clear? Start and origin both are changing the value of location counter. Start normally initializing the value of location counter and origin is resetting the value of what, location counter. This we need to understand. बाकी ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इसमें एक नया इंस्ट्रक्शन और आया है. ओके, दैट वी विल अगेन फोकस. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर देयर इज वन मोर इंस्ट्रक्शन, दैट इज ltorg. ओके, ltorg. यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये ltorg जो भी है, ओके, ये वाला इंस्ट्रक्शन जो भी है, ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो आप समझिए. ओके, दिस इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली फॉर्म लाइक दिस, lt, ओके, प्लस org. Okay, so here LT stands for literal table and your org is saying that organize. यानी क्या करना है आपको, literal table को organize करना है. This stands for what, your LT. So LT is saying that LT is literal table. Okay, मैंने लास्ट इसमें ही आपको बताया था कि हम लोग कहीं पे शॉर्टकट्स यूज करेंगे. So LT is what, it is literal table and org is what, organization. तो हमें literal table को क्या करना है, organize करना है. इसका यहाँ पर क्या है, मीनिंग है. दोस्तों बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी है ये आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी है वो नजर आएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिलहाल मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ. ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज अल्टीमेटली नोन एज व्हाट, स्टार्ट, यानी आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा. मूव आर, ये क्या कर रहा है, रजिस्टर का वैल्यू जो भी है 5 जो भी है, ये ए रजिस्टर में क्या कर देगा, मूव कर देगा. मूव एम, एक्स का वैल्यू रजिस्टर में क्या कर देगा, मूव कर देगा. मूव आर फिर से वही करेगा, मूव इंस्ट्रक्शन. ओरिजिन मैंने आपको बताया, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ व्हाट, योर लोकेशन काउंटर जो यहाँ पे असाइन किया गया था. ltorg, इट विल सेज दैट
LTORG यानी लिटरल टेबल को ऑर्गेनाइज यहां पर करना है। ऑर्गेनाइज करना है यानी एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। एड इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग अस दैट कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सब इज सेइंग दैट कि हमें सबट्रैक्शन करना है। दिस इज व्हाट द कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पे ब्रांच एंड कंडीशंस दैट विल कम अंडर। तो यहाँ पे कुछ तो ऑपरेशन यानी कुछ तो ऑपरेशन हम लोगों को कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को जंप करना है। LTORG अगेन इज व्हाट द सेम इंस्ट्रक्शन, दैट इज यहाँ पे लिटरल टेबल को ऑर्गेनाइज करना है। बैक EQL1 यानी आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, बैक करना है। ओरिजिन फिर से हम लोगों को क्या करना रहेगा, नेक्स्ट +5 यानी लोकेशन काउंटर का वैल्यू चेंज करना होगा। मल्ट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। स्टॉप यानी ये जो भी लूप चल रहा है इस लूप को स्टॉप करने का काम करेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एंड एंड स्टॉप। स्टॉप इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। बहुत जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ओके बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको समझना है स्टॉप यानी क्या, स्टॉप एंड एंड देयर इज डिफरेंस। स्टॉप is to break the stop is to break the loop and end is for ending the program। ये आपको समझना जरूरी है। दूसरा डिफरेंस दोनों में समझना ये जरूरी है कि योर स्टॉप इज IS and end is AD। okay so stop is your imperative statement and end is your assembler directive statement. This also you need to understand from this. Okay so this is the statements that actually I was explaining regarding what stop. Now XDS, this statement is declarative statement. It is simply declaring okay your X as a variable which is used somewhere here. okay X यहाँ पर यूज किया गया है। okay और इस X को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। दोस्तों हमारे केस में C++ में हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था, उसके बाद यूज करना पड़ता था। यहां पर क्या है, वेरिएबल को पहले यूज किया जाता है और उस लास्ट में उसको क्या किया जाता है, नॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है। इस तरीके से ये फैशन है। ओके एंड फाइनली हमें क्या समझना जरूरी है, एंड मींस हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम क्या करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सिंपली कोशिश क्या की, आपको ये जो भी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे समझने की कोशिश की है। ओके सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टास्क। Okay, once we have this particular part with us, what we need to do is observe the code. We have observed the each and every code, and my dear friends, what we did, we have assigned the addresses to it. Okay, we have assigned the addresses to it. Means what? देखिए start 200, ये आपको क्या बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन 200 पर स्टार्ट करो। ओके हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेगा। ओके हमारा अजम्पशन यहां पर क्या है, वी आर अज्यूमिंग दैट वन इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग 1 बाइट एंड दैट इज द रीजन ये वाला इंस्ट्रक्शन यहां पर कितने इस पर आ गया, ये वाला इंस्ट्रक्शन जो भी है, इफ यू ऑब्जर्व दिस इट इज कमिंग एट 200। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके वो कितने पे आएगा नेक्स्ट, दैट इज व्हाट 201, उसके बाद 202। लेकिन यहां पर ये ओरिजिन को चेंज कर रहा है। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये वाला क्या कर रहा है, आपके ओरिजिन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट इज L1 + 3। व्हाट इज L1? L1 क्या है, L1 इज 202। L1 क्या है 202, क्योंकि ये कहां पर आ रहा है 202 पर। तो इस केस में 202 + 3 becomes 205, इसलिए ये नया इंस्ट्रक्शन जो भी है ये कौन से इस पर आ गया, इट इज कमिंग अंडर 205। क्लियर टू यू, इट इज कमिंग एट 205। नाउ व्हेन LTORG इज कमिंग, ओके डोंट वरी, मैं ये फिर से एक बार रिपीट करूंगा, लगे तो पेन और पेपर का इस्तेमाल करूंगा सो दैट और भी आप लोगों को समझे। ओके तो फिर से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ओके मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट 200, व्हाट स्टार्ट 200 इज डूइंग, स्टार्ट 200 में फिर से नए से शुरू कर देता हूं। व्हाट स्टार्ट 200 इज डूइंग, ये लोकेशन काउंटर का वैल्यू 200 को क्या कर देगा, सेट कर देगा। यानी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो कौन सा था, स्टार्ट 200 पर जब रहोगे तो ये वाला नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था। तो इसका एड्रेस आप हम लोगों ने क्या कर दिया, लोकेशन काउंटर इज व्हाट 200, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 200। मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा अजम्पशन क्या है, या यहाँ पर अजम्पशन क्या यूज किया गया है, वन इंस्ट्रक्शन टेक्स 1 बाइट एंड ड्यू टू दैट नेक्स्ट जो भी है आपका वो कहां पर आएगा 201। ये वाला इंस्ट्रक्शन जो भी है कहां पर आएगा 202। ओके उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन जो भी है, जैसे ही ओरिजिन इंस्ट्रक्शन आएगा ये फिर से लोकेशन काउंटर का वैल्यू रीसेट करेगा। कैसे रीसेट करेगा, L1 + 3, what is L1 here, L1 is pointing to 202 and that is the reason 202 + 3 becomes what 205। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका 205 पर आएगा। लेकिन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोगों को किसका यूज करना है, LTORG का यूज करना है। LTORG यानी क्या, या LTORG यानी क्या, ये लिटरल टेबल को ऑर्गेनाइज करेगा।
तो लिटरल टेबल को ऑर्गेनाइज करेगा, यानी एग्जैक्टली क्या करेगा, तो अभी दो लिटरल्स यहां पर आए थे, आप देखिए ये वाला जो भी है इक्वल टू के साथ जो भी आता है, ओके मैं फिर से इसको रिसेट करके दिखा रहा हूं, इक्वल टू के साथ में जो भी आता है वो लिटरल बनता है। योर एक्स इज सिंबल, 5 इज व्हाट लिटरल, अगेन इक्वल टू के साथ में 2 आ रहा है, ये भी क्या बनेगा आपका लिटरल बनेगा। सो फ्रेंड्स देयर आर बेसिकली टू लिटरल्स, वन इज योर 5 एंड अनदर वन इज व्हाट 2। ये आपको लिटरल टेबल में स्टोर करके उसको एड्रेसेस असाइन करने हैं 205 एंड 206। तो ये कैसे आया, तो 205 कैसे आया, तो मैंने आपको ओरिजिन जो भी है L1 plus 3 मींस व्हाट, L1 का एड्रेस क्या था 202, 202 plus 3 becomes 205 and that is the reason your first literal is 5, so it has address like 205. Your second literal is what 2, so उसका एड्रेस क्या आ गया 206। ये LTOG है, ये कोई सिंबल टेबल को टच नहीं करेगा, किसको टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिटरल टेबल को टच करेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो भी है लिटरल्स के बारे में यहाँ पे क्या कर दिया, काम कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कौन सा आया हुआ था, ये। सो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेचुरली कहां से स्टार्ट होगा, 207 से। उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन को एड्रेस क्या देंगे 208, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी व्हाट 209। यहां पर भी फिर से आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे दो लिटरल्स आए हैं, कौन से 1 एंड व्हाट 2, ये दो लिटरल्स का यहाँ पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो फिर से LTOG इंस्ट्रक्शन जब भी आएगा आपको क्या करना रहेगा, जो भी नेक्स्ट एड्रेस है, ये देखिए LTOG आपको यहाँ पर क्या, ये जो भी है LTOG आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, 209 के बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या आएगा 2010, वहां पर आप लोगों ने फर्स्ट लिटरल को स्टोर किया। दूसरा लिटरल जो भी है 2, उसको कहां पर स्टोर कर दिया 211, यानी आप लोगों ने कांस्टेंट को मेमोरी स्पेस जो है वो क्या कर दी, अलोकेट कर दी। तो वो यहां पर इसका मीनिंग होता है। उसके बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन यहां पर आता है, दैट इज व्हाट दिस। इसका जो भी ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या बोल रहा है, आपको बैक, यानी ये आपका बैक यहां पर क्या हो गया, बैक इज योर लेबल। सो इक्वल EQU L1, यानी क्या, जब तक L1 के इसमें आप नहीं आते तब तक आप लोगों को ये एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन आया है दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर योर EQ, this particular instruction is also a similar directive. My dear friends, you need to understand this very very properly. ये कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है, ये जो भी है ये LTOG, ये वाला जो भी इंस्ट्रक्शन है ये असेंबलर डायरेक्टिव टाइप का इंस्ट्रक्शन है। EQU is assembler directive statement and due to that, ये assembler directive statement होने के कारण आप लोगों को यहाँ पर कोई स्पेस असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दोस्तों याद रखना, असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट जो भी है उसको आप लोगों को कोई स्पेस असाइन करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कौन से असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट थे वो समझिए। असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर कौन से थे, एक तो था स्टार्ट 200, ये था, इसको हम लोगों ने कुछ भी मेमोरी जो भी इसको कोई हम लोगों ने लोकेशन काउंटर का वैल्यू असाइन नहीं किया। उसके बाद आया था ओरिजिन, इसे भी हम लोगों ने कोई लोकेशन काउंटर का वैल्यू असाइन नहीं किया। उसके बाद आया था LTORG, इसको भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आया EQU, इसको भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद एंड जो आएगा इसको भी कुछ नहीं किया। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि देयर आर बेसिकली व्हाट दिस मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि वी आर एक्चुअली यूजिंग EQ। ओके, तो ये हम लोगों को सिंपली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे L1 का वैल्यू जो भी है ये बैक को क्या कर दो, असाइन कर दो। तो बैक का वैल्यू अभी क्या बन जाएगा, जो L1 का वैल्यू है। L1 का वैल्यू क्या था, तो L1 का वैल्यू जो भी था 202, उसको अभी बैक भी क्या करेगा, वहीं पे क्या करेगा, पॉइंट करेगा। सो दिस इज जस्ट एन इक्वलिटी स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन नेक्स्ट प्लस 5, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर था, नेक्स्ट यानी क्या, नेक्स्ट इज 207, 207 प्लस 5 यानी क्या बनेगा 20212 एंड दैट इज द रीजन आपका नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन यहां पर आया है वो कहां पर आ गया 212। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा था आपका, मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला इंस्ट्रक्शन जो भी था ये हम लोगों ने 212 पे लिया। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा आया 213, दैट इज व्हाट स्टॉप, यानी जो भी लूप चल रहा है उस लूप को क्या करना है, स्टॉप करना है। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन जो भी आ रहा है दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, दैट इज अल्टीमेटली योर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट 214, यानी क्या आप x को यहां पर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो नेचुरली 214 ये एड्रेस उसको चला जाएगा। एंड फाइनली एंड यहां पर आया, तो यहां पे एक लिटरल का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ था दैट इज 4, उसको फिर से एक स्पेस हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को ये जो भी कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, ओके, मैं समझ सकता हूं थोड़ा बहुत आप लोगों को यदि इसमें से समझ में आया होगा तो मैं आगे का आप लोगों को फिर से ये वाला जो भी पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे क्या करूंगा, रिपीट करूंगा और रिपीट करके मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि हाउ वी आर एक्चुअली व्हाट वर्किंग विद दिस। तो कल मैं पेपर और पेन का इस्तेमाल करके ये प्रोग्राम फिर से आप
एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है, ओके। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस वी विल एक्चुअली डू बाय व्हाट पेपर। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन क्या किया, वी अप्लाइड द वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर। यानी दोस्तों, जब भी आपको प्रोग्राम, यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नोटपैड बना देता हूँ, ओके। नोटपैड बना रहा हूँ जहाँ पे पास 1 का टास्क जो भी हो आएगा। सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, अप्लाई एलसी, मींस हम लोग को लोकेशन काउंटर के वैल्यूज जो भी हो क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो वो यहाँ पर किया गया है, वी हैव अप्लाइड द वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर। सब जगह पे लोकेशन काउंटर का वैल्यू हम लोगों ने अप्लाई किया। तो जैसे ही आपको ये वाला कोड मिलेगा, इसके आगे उसके लोकेशन काउंटर के वैल्यूज हम लोग जब लिखते हैं, दैट इज नोन एज अप्लाई लोकेशन काउंटर। नाउ द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज क्या बोल रहा है, आपको सिंबल टेबल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस सिंबल टेबल। So what, how many symbols are there? So you can observe here, x was one of the variable, L1 next और back, ये जो भी है ये exactly क्या है दोस्तों, this is ultimately your labels। तो labels भी यहाँ पर क्या होते हैं, symbols होते हैं। तो दोस्तों variables and labels both are becoming what, symbol, so that you can understand that x ये कहां पर आया था, 214। ये 214 पर क्यों आया, तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर x जो भी है ये यहाँ पर असाइन किया गया। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कहां पर असाइन किया गया x का वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर एड्रेस कौन सा था, 214, एंड ड्यू टू दिस 214, ये वाला जो भी 214 जो भी है, ड्यू टू दिस हम लोगों ने इसको लोकेशन काउंटर को जो भी है वैल्यू वहां पर वो असाइन की। L1 का वैल्यू क्या था, 202, नेक्स्ट का वैल्यू क्या था, 207, बैक का वैल्यू क्या था, तो यहाँ पर आएगा 211। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा जब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इस पर जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या हो गया, सिंबल टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा नेक्स्ट का वैल्यू क्या है, 207, बैक का वैल्यू क्या है, 202। क्यों बैक का वैल्यू 202 है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इक्वल किया हुआ था L1 का। तो जो L1 का वैल्यू है वही क्या बना था, बैक का वैल्यू। तो दोस्तों यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट द सिंबल टेबल। ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या आता है, इंडेक्स, यानी 0 से हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, बराबर है। तो 0 1 2 3 ये सिंपली क्या है, आपका सीरियल नंबर है। सिंबल का नाम, जो जो प्रोग्राम में आपको सिंबल्स के नाम या वेरिएबल्स के नाम या आइडेंटिफायर के नाम दिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एड्रेसेस, जो जो एड्रेसेस आपको मिलेंगे वो मेमोरी एड्रेसेस, मींस लोकेशन काउंटर के वैल्यूज, वो आपको यहाँ पर डालने हैं दोस्तों। Okay, so that is the job of symbol table. So my second step will be what, my second step will be what, construct symbol table। तो सिंबल टेबल हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। सो दैट इज व्हाट द सेकंड स्टेप। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिटरल टेबल भी बनाना है। सो यू नीड टू प्रिपेयर द लिटरल टेबल। इसका भी यदि आप ये डेटा स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इसका सिंटैक्स भी सेम है, इंडेक्स देन नेम ऑफ लिटरल, यानी सिंबल की जगह पे लिटरल का नाम और उसका एड्रेस। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 5 था, 2 था, 1 था, 2 था, 4 था, इन सब के यहाँ पे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों लिटरल कैन बी रिपीटेड बट सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड। वेरिएबल का नाम तो एक ही रहेगा, आप बार बार उसको यूज करोगे, लेकिन कांस्टेंट जो भी है वो अलग अलग आ सकते हैं। यानी आप 2 ये वैल्यू एक से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। दैट इज द रीजन यहाँ पे ये रिपीटेटिव आ सकता है। और ये एड्रेसेस कैसे लिए, तो एग्जांपल देखिए, 5 जो भी है ये कहां पर आया था, तो ये आपको इस प्रोग्राम में समझ में आएगा। ओके, इस प्रोग्राम में आपको समझ में आएगा कि ये 5 जो भी था ये कहां पर आया था। आप देखिए 5 इज व्हाट, इट इज कमिंग हियर। तो 5 यहाँ पे 200 पर नहीं आया था दोस्तों, please focus properly। 5 was not there with what, 200, it is with what, it is here, that is 205, and that is the reason यहाँ पर आप लोगों को जो भी है उसका लिटरल का वैल्यू जो भी है 205 जो भी है वो आया है। so this way we are actually building what, literal table। ओके उसके बाद आपको पुल टेबल जो भी है वो देना था। पुल टेबल कंटेन स्टार्टिंग लिटरल, दैट इज इंडेक्स ऑफ ईच पुल, यानी जितने भी लिटरल्स है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग जो भी है ये जो भी है वो देना है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपको आगे कंटिन्यू करूंगा कि क्या एग्जैक्टली ये चीजें है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस द वर्क ऑफ व्हाट, पास 1 assembler। ओके, एंड फॉर दिस नाउ बी रेडी फॉर टुडेज क्विज। Dear students, I am giving you what, quiz, and you have to apply for the quiz. Always remember, I am taking attendance from what, quiz also। So now I am launching this particular poll to you। ये पोल सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। Try to answer this particular poll। There are 2 questions given into that। इसका भी स्कोर आपको आगे काम आएगा। So please attend it properly। I am giving you 1 minute now।
Oh my God. Hello. डियर फ्रेंड्स, आई हैव शेयर्ड अटेंडेंस लिंक विद यू। ओके, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बारे में यहाँ पे बताया कि असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट ओके आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इट इज फॉल्स। राइट आंसर इज व्हाट? फॉल्स। जिन जिन लोगों ने ट्रू दिया है दैट इज रॉन्ग। असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट आपके किसके जैसे होते हैं? कमेंट जैसे होते हैं। उसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेम इंडिकेट्स असेंबलर डायरेक्टिव, यानी असेंबलर को डायरेक्ट करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते। Move a comma 10 is dash type of statement. It is known as imperative statement. मैंने आपको पहले ही बताया था जो एक्शन वर्ब है these are all imperative statement. Assembler directive statement कौन से होते हैं? तो start होता है, end होता है, LTORG होता है, EQU होता है, origin होता है। these are all assembler directive statement. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कौन से होते हैं? तो डीएस एंड डीसी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर देयर, दैट इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ टुडेस क्विज। आई होप you all will enjoy this type of teaching learning. If you have any doubt, you can ask or you can take exit for the next lecture. If you have doubt, you can please ask. Kindly ask the doubt if you have. So I hope if you have any doubt, you can ask. Okay, if no more doubts, we can stop. I have shared the attendance link on YouTube also. Thank you all.